the Medical University, Honorable Vice Chancellor, Sir, senior faculty members from KGMU and other universities, students and delegates, and ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. On behalf of the administration and faculty of King George's Medical University, Lucknow, I welcome you all to this Y20 Consultation. It is a matter of great pride for us that the Department of Youth Affairs, Government of India has entrusted King George's Medical University with the responsibility of organizing this unique program on health, well-being and sports for the youth of our country. The youth are the key stakeholders in the development of any country. So, the prime objective behind this program is to increase awareness about global issues amongst the youth and to provide a platform for the youth to voice their opinion and ideas so that their perspective may be included in the G20 process and decision making. So without much ado, I now invite the dignitaries to please take their seats on the dais. Our chief guest, Mr. Navneet Sehgalji, Additional Chief Secretary, Ministry of Youth Affairs, Government of UP, Shri Pankaj Kumar Singh, Director, Ministry of Youth Affairs, our Vice Chancellor, Lieutenant General Bipin Puri sir, our Pro-Vice Chancellor, Professor Vineet Sharma sir, and Professor A.K. Tripathi, Dean, Faculty of Medicine. To express our gratitude and respect, we would like to welcome our guests with flowers. I would request Dr. Shreya to do the honors. Our chief guest, Mr. Navneet Sehgalji, Shri Pankaj Kumar Singh, Director, Ministry of Youth Affairs, our Vice Chancellor, Lieutenant General Bipin Puri sir, our Pro-Vice Chancellor, Professor Vineet Sharma sir, Professor A.K. Tripathi, Dean, Faculty of Medicine. जल ही जीवन है, इस बिन सब निर्जन है. May I now request all the dignitaries on the dais to please step forward and formally commence this program with the auspicious Jal Bharo ceremony. This ceremony is symbolic of the immense importance of water conservation and keeps reminding us कि जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है. मानव रखना याद को जल जीवन का मूल बूंद बूंद संभालना रखना यही उसूल पानी अमृत था कभी सूखी नदियां ताल दर दर है सब खोजते जीवन हुआ मुहाल जल बिन जीवन व्यर्थ है जल देता है. Light represents prosperity and abundance, and it symbolizes the brightness of knowledge and wisdom over ignorance. I request all the dignitaries to light the lamp and formally inaugurate this function. As the shlok goes, Deepam Jyotir Param Brahma, Deepam Jyotir Janardana, Deepo Hartu Me Papam, Sandhya Deepam Namastute. With folded hands, we all pray to the Almighty to lead us from ignorance to knowledge, from darkness to light, from immorality to righteousness. बुद्धिमं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः
संसाधनों का सेतु बनाकर इंडिया को नया भारत बनाना चाहते हैं। हाँ, हम राष्ट्र निर्माण कर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। सड़कों का स्वर्णिम चतुर्भुज बनाकर हम दूरियों को घटाना चाहते हैं। हाँ, हम राष्ट्र निर्माण कर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हर बेटी को शिक्षा और सारे अधिकारों के साथ नए पंख दिलाना चाहते हैं। हाँ, हम राष्ट्र निर्माण कर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। स्वच्छता के संस्कारों से स्वास्थ्य को समृद्ध करना चाहते हैं। हाँ, हम राष्ट्र निर्माण कर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। Respected dignitaries on the dais and everyone present here, a very, very warm and hearty welcome to all of you. As we all know that we are gathered here for this Y20 Consultation in King George's Medical University. So for this, first of all, I invite Honorable Pro Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow, Professor Vineet Sharma, sir, for the welcome address, sir. Thank you, Pavit. Respected Shri Navneet Sehgal ji, ACS Sports and Youth Affairs, Honorable Vice Chancellor, Lieutenant General Vipin Puri ji, Mr. Pankaj Kumar Singh, Director, Department of Youth Affairs, Professor A.K. Tripathi, Dean Academics. International and national speakers, Y20 representatives from IIM Kanpur, Mr. Vinod from IIM AIIMS, participants from all 75 districts of Uttar Pradesh, Anmol Soviet Chair, Y20 India, Shri Sivanand Dwivedi, Advisor to Y20, participants from affiliate colleges, officials and delegates from the Ministry of Youth Affairs, international delegates, participants from Sports College, moderators, session coordinators, members of the panel session, faculty, students and staff of KGMU, guests from press and electronic media, distinguished guests, ladies and gentlemen. We feel honored to have been given this opportunity to hold this event, and on behalf of King George Medical University, it is my pleasure to welcome you all to the Y20 Consultation event on health, well-being and sports. Agenda for the Youth, organized with support from Department of Sports and Youth Affairs, Government of UP, under the aegis of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Various youth promotional activities were carried out in KGMU, affiliated colleges, along with 75 districts of the state in the last 1 month, and selected candidates from each district who are also brand ambassadors of their districts are representing their districts in this conclave. The youth activities included a walkathon, debates, dances, nukkad natak, rangoli competition, quiz, seminar on menstrual hygiene, and a panel discussion on the occasion of International Women's Day. The highlights included an interview with a youth icon, Ms. Palak Kohli, a para badminton athlete who has represented India in the Para Olympics. The purpose of this conclave is an interaction amongst the youth from different districts of the state with different background, and to bring awareness amongst them by honored international national faculty through panel discussion and interactive sessions. An ice-breaking ceremony was held yesterday for the participants and the faculty to get acquainted with each other, so that the representatives who are brand ambassadors will be able to interact freely during the consultation and spread the message of this conclave amongst the youth of their districts. Swami Vivekananda, who was the great youth icon of India, inspired millions of youth all over the world and said, "Power is within you and you can anything and everything. Believe in that. Do not believe that you are weak," and he called upon the youth to focus their collective energies in nation building. And the purpose of this conclave is also the same. The faculty, doctors and students of this university have worked hard to make this event a success. And I'm sure you'll enjoy the deliberations and the hospitality during your stay. Thank you very much. Thanks, sir. It is a matter of great honor and pride that we are presiding the G20 nations, and this is not only a diplomatic meeting. It is a new responsibility for all of us to show our capabilities and to produce new opportunities for the youth of all the world family. Now I request Shri Pankaj Kumar Singh ji, Director, Ministry of Youth Affairs, to please come up on the dais for his address. Thank you. Dr.
Navneet Kumar Sehgal, respected Additional Chief Secretary, Youth Welfare and Sports, Government of Uttar Pradesh. Lieutenant General Dr. Bipin Puri, Vice Chancellor, KGMU. Dr. Vineet Sharma, Pro Vice Chancellor. Professor Tripathi, Dean Medical Faculty. Shri Anmol Chauvit, Y20 Chair. Young students and delegates from different G20 countries and various organizations from India. Namaste and a very good morning to all of you. On behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs, I extend my heartiest wishes to the respectable dignitaries on dais, youth delegates and representatives, respected panelists, participants, and everyone present here. It is a matter of great delight for all of us to witness the unfurling of the much-awaited Y20 Consultation at KGMU. It is a privilege to associate with one of the oldest and most respected medical institutions of the country. The sprawling campus nurtures the dreams, hopes, and aspirations of over 5,000 young aspiring doctors. I truly see it as one of the leading hubs for excellent medical education, unparalleled medical ethics, groundbreaking research, and a center for shaping future generation of doctors. So I would like to mention here now what is the relevance and importance of G20 and especially Y20 as we are conducting engagement group meetings in different fora, in different verticals. So this brings me to the fact that today India is already seen as a leader at the global map. December 1, 2022 will remain a watershed moment in the history of India as we assume the G20 presidency. This is a glorious opportunity for us, and this is the first time in country. It is an honor as well as a great responsibility as this occasion has arrived during the Amrit Kal of our independence, and it also marks the commencement of our journey for reaching 100 years of independence. We have the largest youth numbers in the world. Although the age group as the national youth policy is 15 to 29 years, but if we see as the international standards, that is up to 35 years of age, and we can call this as the young population, that the number is 800 million. That is more than 66% of the population. 800 million, that is 80 crores of population, is such a big resource, is such a big group who are the main stakeholders in the development of our country. Under the ambit of India's G20 presidency and the vision of Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, and one future, India has received a unique opportunity to contribute to the global agenda of pressing issues of international importance. It is time for us, for you, for the youth, to showcase their potential for taking the global leadership. India's G20 presidency brings the prospects to devise a mechanism which allows young representatives to discuss, debate, and exchange ideas on the various G20 priorities. The Youth 20 Forum is one such forum where future young leaders from various G20 member countries and various organizations of our country, including the students, the young, they come together and deliberate and discuss upon the themes which have been decided for the Y20 engagement group this year. The themes are peace, building and reconciliation, ushering in an era of no war, future of work, Industry 4.0, innovation and 21st century skills, shared future, youth in democracy and governance, health, well-being and sports, an agenda for youth, climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life.
We have gathered here today to discuss and deliberate on one of the themes, that is health, well-being and sports, an agenda for youth. The panelists that we have here today, they are persons of high eminence with experience and expertise on the subject matter. They are industry experts, and their valuable insights will add significant meaning to the Y20 consultation. Youth 20, as the name suggests, it's a youth-oriented engagement forum, and I'm extremely pleased to see the dynamic young people from fields of mental health, sports, yoga, and Ayurveda. They are the panelists with us today. We have young, learned panelists. I'm sure they would shed lights on interesting topics that I have just mentioned, and that would surely spark curiosity amongst all of us, amongst the students, among the future doctors. It is our aim to include diverse young voices in the Y20 consultations so as to enable the process of social inclusion for youth that involves participation in decision making for policy recommendations. This will further promote youth's role as an active contributor to the society. Youth has immense transformative powers, and youthful energies harnessed and leveraged in the right direction can indeed put the world on course to a more holistically and healthy future. The Government of India prioritizes youth development and works towards creating an ecosystem for empowering the dynamism of young people through several youth intervention programs and schemes. Various programs have been initiated under the leadership of the Honorable Prime Minister of India to optimally tap the youth's constructive and creative energies. Capturing the enthusiasm of youth, the Youth 20 Forum will be crucial as we discuss the modalities and mechanisms for developing well-crafted policy recommendations by the young representatives for relevant G20 and Y20 priority agendas, with a focus on global health architecture, digital transformation, and sustainable energy transition. As per the theme selected by the KGMU, that is Health, Wellbeing and Sports Agenda for Youth, it is time that we aspire to achieve global standards in medical education and excellence in health infrastructure. It is also our duty as the 21st century citizens of the global world to promote participation in sports and working with the sports community to advance health for all. It is our collective responsibility to ensure healthy lives and well-being for all ages by investing in our youth for the Y20 priorities. It will pave the way for prosperous health for future generations. It will lead towards an era of no war, encourage participation of youth in democracy and governance, and promote sustainability as a way of life. The Honorable Prime Minister has already put forwarded a futuristic vision of one earth, one health, which entails a universal vision for health for all. Therefore, a holistic approach is needed to realize this vision. It is time that India takes the lead in realizing the one earth, one health vision with a holistic policy making environment and align it with the philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam. The world, our earth, is known as Vasundhara or Vasumati. Vasu literally means wealth or the resources. To make our lives gratifying and blessed, and to ensure that the earth is presented as a gift to the future generations, we need to take care of ourselves and our earth's resources, learn from each other's best practices, and enrich our work models and work in synergy with each other to ensure that collective actions have leave behind a healthier world than the one that we have. On that note, I would like to congratulate the KGMU team for hosting the Y20 consultations, and I wish them all success. I also wish that we come out with those suggestions that form part of the Y20 communique, which would be a policy recommendations
for the overall G20 agenda. And I hope that the discussions and deliberations that are done here today, they will find a way not only into the G20 community, but also to set standards for ourselves in the field of health, well-being, and sports. Thank you so much once again for inviting me here today. Thank you, sir. Thanks a lot, Shri Pankaj ji, for enlightening the concepts and views of the Y20 and G20, which is One Earth and One Health. महोदय कहते हैं कि हालात से टूटते हैं तारे, हालात से टूटते हैं तारे, पर सिकंदर नहीं टूटता, और आ के गिरती हैं लहरें समंदर में, पर कभी समंदर लहरों में नहीं गिरता. From the last 118 years, the ocean-like King George's Medical University is continuously producing one of the best healthcare providers for the world family, and always prepared to become a role model towards the health, well-being, and care of humanity. Now I request the carver of this university, Honorable Vice Chancellor, King George's Medical University, Lieutenant General Dr. Bipin Puri ji, to please come up for his address, sir. Shri Navneet Sehgal ji, ACS, Department of Sports, Government of Uttar Pradesh. Shri Pankaj Kumar ji, Director, Ministry of Youth Affairs. Professor Vineet Sharma ji, Pro Vice Chancellor, KGMU. Professor A.K. Tripathi, Dean Academics, KGMU. Eminent faculty, jo national and international faculty which has come from far and wide, international and national delegates, students from all districts of Uttar Pradesh and affiliated colleges of KGMU, members of the print and electronic media, friends, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं KGMU की तरफ से एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं. मैं समझता हूं कि it is a matter of great pride that the Republic of India has taken over the presidency of G20 nations. एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है भारत के इतिहास में, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल फ्रेटर्निटी ने दी है भारत को कि आप हमारा जो फ्यूचर है उसको नेविगेट करें. तो मैं समझता हूं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन, एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हमें KGMU को एक हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स पे एक 1 day 2 days सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए बताया. तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस, अ वेरी हिस्टोरिक, अ वेरी मोमेंटस ओकेजन. एक मुद्दा मैं उठाता हूं कि एक जो Y20 जो हमारा जो ग्रुप है, इट इज एक प्लेटफॉर्म है, एक आपके पास एक एरिया है जहां पर आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग, यू कैन एंटर इनटू अ डायलॉग. एंड कुछ जो ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उसमें आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स कर सकते हैं. बहुत बहुत खुशी है मुझे कि आज हमारे बीच 7 इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स आए हैं टू नेविगेट, एंड 12 नेशनल लेवल के जो फैकल्टी मेंबर्स आए हैं जो आज के कार्यक्रम को चलाएंगे. वो जो हमने जो सेमिनार बनाया है, जो हमारे जो 3 सेगमेंट्स हैं अब आज के सेमिनार में, उन तीनों सेगमेंट्स को वो चलाएंगे. बहुत खुशी है मुझे कि करीब 300 डेलीगेट्स including officials from the Ministry of Youth and Cultural Affairs, Government of India,
international delegates, national delegates, and हमारे उत्तर प्रदेश, सारे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे सिलेक्ट करके आज इस कार्यक्रम में आए हैं. मैं KGMU की तरफ से G20 कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, रशिया, मेक्सिको एक्सेट्रा, बहुत G20 कंट्रीज से जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं. जैसा कि आपको पहले भी बताया कि 1 महीने से, आज से 1 महीने पहले से हमने कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए KGMU में, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो यूथ के लिए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनको हम उठाएं, उनको हम डिस्कस करें, और हम उन मुद्दों के कुछ जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कोशिश करें कि कुछ एक कंसेंसस स्टेटमेंट बने. अब कुछ मुद्दे जो हमने उठाए, जिन पे हमने डिस्कशन किया, हमने प्रोग्राम्स करे, वो थे विमेन वेलनेस के, सेविंग द प्लैनेट अर्थ एंड क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आप लोगों को मालूम है. ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ी अहम प्रॉब्लम है हमारे यूथ में. राइट टू एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, ये भी हमने एक मुद्दा उठाया. सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन रिजल्टिंग इन स्लीप डिप्रिवेशन सिंड्रोम, ये भी हमने इस पे भी हमने एक प्रोग्राम चलाया. रोड सेफ्टी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और विमेन एम्पावरमेंट, ये कुछ ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं. ये सिर्फ भारतवर्ष के नहीं हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ये ग्लोबल इश्यूज हैं. हमने इन सब पे चर्चा करी, कुछ डिस्कशंस किए और कुछ हमने इसके सॉल्यूशंस बताए. भाइयों और बहनों, बॉयज एंड गर्ल्स, कोविड-19 के बाद बहुत ये सारा जो विश्व है, सारा वर्ल्ड जो है चेंज हो गया है. इसमें मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आया है, बिकॉज कई लोगों को स्ट्रेस भी था, कई लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया. एंड ये मैं कहता हूं कि इंडिया की बात नहीं, सारे वर्ल्ड में ये एक स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है. तो मेंटल स्ट्रेस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे. हम योगा पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे योग हमें मेंटल स्ट्रेंथ, रोबस्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है. और तीसरी बात जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है आज के टाइम में हमारे बच्चों के लिए. अगर आपको स्पोर्ट्स की अगर कोई इंजरी होती है तो आप कैसे उस इंजरी से, पहली बात तो आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको इंजरी होती है तो उसको कैसे आप जल्दी से उसको ठीक कर सकते हैं और अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं. ये कुछ ऐसे हम जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो इस बात पे चर्चा करेंगे और आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं. मैं एक बार फिर मिसेस मीता राजीव लोचन, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, श्री पंकज कुमार जी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, और श्री नवनीत सहगल जी जो हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हैं, जो ACS हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. मैं उन सब का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मदद से हमने जो भी आज हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो सब उन्हीं के हेल्प से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम इसको कर पाए हैं. एंड once again I congratulate all of you, all the boys and girls who have come from all over the country and from across the globe, for participating on something which is so contemporary, so current, and जो कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके कल को डिसाइड करते हैं. तो मैं आप सबका once again in this historic city of Lucknow welcome you once again. Thank you, ladies and gentlemen.
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचारों के लिए. And on this auspicious occasion of Y20, today we are enthusiased with the presence of the Additional Chief Secretary, Mr. Navneet Sahgal ji, as a chief guest of this program. Now I invite him for his words of wisdom with a big round of applause. धन्यवाद. आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित जनरल पुरी, वाइस चांसलर KGMU, हमारे पंकज सिंह, निदेशक भारत सरकार, प्रो वाइस चांसलर साहब और मंच पर उपस्थित सभी, हमारे बीच में बच्चों के साथ साथ हमारे काफ़ी बुजुर्ग भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद. बच्चों, पहले तो मैं जो हमारे बच्चे विभिन्न जिलों से, जनपदों से चुनकर आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा. आप अपने लिए एक जरूर ताली बजाइए, बिकॉज ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे आज आए हैं, ये अपने अपने जनपद में, अपने अपने ज़िले में ये कंपटीशन के थ्रू एक आए हैं. और ये एक बड़ी अचीवमेंट इन लोगों की है, क्योंकि हर ज़िले में डिक्लेमेशन कॉन्टेक्स्ट और पेंटिंग कंपटीशन 2 मुद्दों पर आयोजित किया गया था. एक मेंटल हेल्थ और स्पोर्ट्स और वेलबींग, और दूसरा था फ्यूचर ऑफ ऑफिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ऐसे मुद्दे थे. तो आज जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, वो ज़्यादातर उनमें से वो हैं जो कि जिन्होंने अपने जनपद में टॉप किया है, मतलब दे हैव कम. सो वी हैव मेरिटोरियस स्टूडेंट हियर, और उनके लिए और उत्तर प्रदेश सरकार भी आप लोगों को अलग से भी सम्मानित करेगी. प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार भी आपको दिया जाएगा, आपके खातों में भेज दिया जाएगा. आज मुझे, चूँकि ये सब लोग उस मुद्दे पर, आप बच्चों ने उस पर बहस की होगी अपने अपने ज़िले में, Y20 और G20 और मेंटल हेल्थ और स्पोर्ट्स और वेलबींग, आज दिन भर आपको इसी पे लेक्चर मिलने वाला है कि क्या कैसे करें, क्या ना करें, क्या होना चाहिए. मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा बहुत ब्रीफ में. कि पहला तो हम सब लोगों को, हम जितने नागरिक हैं इस देश के, सबको गर्व होना चाहिए कि उत्तर के पूरा देश जो है, भारत जो है, G20 का नेतृत्व कर रहा है. G20 क्या है? जो दुनिया के 20 बड़े शक्तिशाली देश हैं, उनका एक समूह है. आपने कहीं आज अखबार में भी पढ़ा होगा कि चीन और रूस जो है, ये कोशिश करेंगे यूक्रेन का मुद्दा G20 में ना उठे. तो देखिए G20 कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब दुनिया में देश लड़ रहे हैं, दुनिया में आर्थिक समस्याओं का एक डिस्कशन चल रहा है कि किधर मंदी आने वाली है, अमेरिका में बैंक बंद हो रहा है, यूरोप में परेशानी हो रही है. उस परिप्रेक्ष्य में हम सबको अपने वर्तमान नेतृत्व पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जो नेतृत्व उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में ये देश की एक इम्पोर्टेंस बढ़ी है, इस भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई है. क्योंकि दोनों जो लड़ रहे हैं, वो दोनों लोग ये बात, दोनों भारत से जरूर बात कर रहे हैं. कोई ऐसा देश नहीं है जिनसे यूक्रेन और रशिया दोनों ही बात कर रहे हों. केवल भारत एक ऐसा देश है जिनसे दोनों देश बात कर रहे हैं. और उसके लिए हमारे नेतृत्व पर हमको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने देश की स्थिति ऐसी स्थिति पे अभी लाई है कि दुनिया उस पर देख रही है देश को कि भाई ये देश हमको लीड करेगा. उसी जो ग्रुप ऑफ 20 के जो डिस्कशन चल रहे हैं, यहाँ लखनऊ में भी उस संबंध में कंसल्टेशन हुए थे, कुछ बैठकें हुई थी दुनिया के प्रतिनिधियों की. तो ये एक बड़ा, मैं भारत सरकार की जो हमारी यूथ मंत्रालय है, मैं उसका भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक महत्वपूर्ण क्षण क्या हुई पूरा वर्ष है, उसके बारे में हमारे युवाओं को जानकारी पहुंचाने के लिए ये एक प्रयास पूरे देश में किया गया है. बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं.
आप देश के राजनीतिक आर्थिक पहलुओं पर यदि आपकी नज़र होगी, आप सोचते होंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में आप इस देश का जो है भविष्य बदल सकते हैं। इस देश को जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में और आगे ले जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको इसका महत्व पता चले कि ये ग्रुप ऑफ 20 की लीडरशिप का क्या मतलब होता है, इसका क्या मायना है। इसलिए चूंकि इसी को आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने हर जिले में ये वाद विवाद प्रतियोगिताएं और पेंटिंग कंपटीशन आयोजित कराए, ताकि ये हर जिले तक, हर कॉलेज तक, हर स्कूल तक, हर बच्चे तक ये पहुंचे कि ये ग्रुप ऑफ 20 की लीडरशिप का क्या मतलब है और वर्तमान नेतृत्व का इसमें कितना बड़ा योगदान है। बच्चों, मैं केवल ये बताऊंगा आज दिन भर आपको, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे, आप दिन भर उस पर ध्यान से सुनिएगा। मैं अनुरोध करूंगा वीसी साहब से कि जो आपके विशेषज्ञ आए वो थोड़ा हिंदी में भी बात करें। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, वो उनके ऊपर से निकल जाएगा। तो दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में हम सबको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपने यहाँ पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ाते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क भी तभी होगा जब शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें। और सेहत का ध्यान रखने का उसका एक रास्ता है कि सुबह जल्दी उठें। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने जल्दी उठें, लेकिन मैं नई जनरेशन को देखता हूँ, वो जो एक आदत पड़ी है स्मार्टफोन वाली या टेलीविज़न देखने वाली, वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, ये यंत्र जो हैं, ये हमें हमारी जो लाइफ है उसको आसान करने का एक साधन है, लेकिन हमको उस यंत्र का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब आवश्यकता हो तो उसको इस्तेमाल करें, जब नहीं आवश्यकता हो तो उसको रख दें। मैंने देखा है कि बच्चे रात में भी वो उसको लगा के कुछ नेट पे चले जाएं, ये सब देखते रहेंगे, जो कि व्यर्थ है। और सुबह उठेंगे 10 बजे 8 बजे, भाई जो जिसकी सुबह 7 बजे स्कूल है वो तो चलो भागता हुआ जाएगा। वो भी क्या होगा कि आधा कपड़ा डाला, आधा नहीं डाला, कुछ जूता डाला नहीं डाला, भागते पड़ते किसी तरह से स्कूल पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो है, एक देखिए, मैं जानता हूँ यूथ जो है वो बहुत उच्छृंखल होता है, मतलब बहुत ही शरारती है, बट वो शरारत का भी एक उसका समय होना चाहिए और उसका एक, क्योंकि ये जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ की, तभी आती हैं जब आदमी स्ट्रेस में होता है। और इस उम्र में कौन सा स्ट्रेस हो सकता है भाई? मुझे मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि इस उम्र में आपको काहे का स्ट्रेस है? दुनिया खत्म होने वाली है, ये स्ट्रेस हो सकता है कि साहब हम जब तक 40 साल के होंगे मालूम नहीं दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी। क्या स्ट्रेस हो सकता है? कुछ भी तो नहीं है भाई। ठीक है, आप अपनी अगर मेहनत करते रहेंगे तो क्लास में अच्छे नंबर पाएंगे, तो नहीं भी पाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, आप कुछ ना कुछ सोच के रखिए क्या कर सकते हैं। मुझे वो जो 3 इडियट फिल्म है वो बड़ी एक व्यवहारिक लगती है उसमें, कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है। देखिए, आजकल स्किल पे बहुत जोर है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी आइंस्टाइन बने, हर बच्चा आइंस्टाइन बने। कोई बच्चा बेहतर फोटोग्राफर बन सकता है, दुनिया में नाम कर सकता है। कोई बच्चा बेहतर टेक्नीशियन बन सकता है, दुनिया में नाम कर सकता है। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। सिर्फ एक फील्ड में अगर आप नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस लेते रहें और उससे मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी जैसे पंकज जी बता रहे थे, हमारा इस देश की मुख्य ताकत क्या है? आप हैं, यूथ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 50% से ज्यादा यूथ हैं। और देखिए दुनिया क्या है, अभी हम लोग जर्मनी गए थे, जापान और जर्मनी में
जो बूढ़े हैं उनकी संख्या 60% हो गई, 70% हो गई। यूथ ही नहीं है वहां पे। जर्मनी में हम लोग गए, वो बोले साहब आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, उनको जर्मन सिखाइए, हम काम देंगे उनको, यहाँ पे हमें चाहिए। जापान में जो 40 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज हो गया है। तो जो यूथ है वही हमारी एक शक्ति है। आप हमारी शक्ति है, इस देश की शक्ति है, दुनिया की शक्ति है। तो आपको सही दिशा में जाना है, और सही दिशा में जाने के लिए जरूरी है कि आप आज की जो ये वर्कशॉप है इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। स्ट्रेस न लें, स्ट्रेस न लें, क्योंकि दुनिया में देखिए कोई कुछ भी कहे, दुनिया अंतहीन है और दुनिया चलने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली है, किसी न किसी शेप में चलती रहेगी। तो ये मत मानिए कि साहब जो आज है आज खत्म हो गया, आज नहीं खत्म, कल भी है। लेकिन आज के बारे में सोचिए, जो चला गया उसके बारे में बहुत समय मत लगाइए, और जो आने वाला है उसके बारे में इतना मत सोचिए। आज कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें, और यही हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। कुछ भी आप करें किसी भी क्षेत्र में, वो पुरानी कहावत हो गई कि साहब जो है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। अभी तो खेल कूद वाले नवाब बने हैं आजकल, आपने देखा होगा ना। मतलब जो दुनिया के टॉप अर्नर्स जिसको बोलते हैं, आप सेलिब्रिटीज को देखिए, कौन कौन है सेलिब्रिटीज, फुटबॉलर्स हैं, हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स हैं, कई हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सब लोग जो है बस रट्टा मारते रहे, और रट्टा मार मार के अपना जो है उसको पास होते रहे और कहेंगे हम सब उस्ताद हो गए, ऐसा नहीं है। एक कॉमन सेंस भी साथ में रखिए। और मुझे उम्मीद है आज दिन भर का जो सेशन है आप लोगों को नई नई चीज़ें बताएगा। ये मत मानिएगा आप लोग कोई मानसिक अस्वस्थ हैं, ये नहीं बताने वाले इधर, ये बताने वाले हैं कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी, आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, आपके संबोधन के लिए। हमारे ऋषियों ने भी कहा है जीवेम शरदा शतम, अर्थात कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें, और ऐसा करने के लिए हमें बड़ी नियंत्रित अनुशासित जीवन शैली का उपयोग करना होगा। आज के कार्यक्रम की स्मृतियां मस्तिष्क पटल पर बनी रहें, विद्यमान रहें, इसके लिए हम अपने अतिथियों को कुछ स्मृति चिन्ह पेश करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आग्रह करता हूं माननीय कुलपति जी से कि कृपया वो मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री पंकज कुमार सिंह। माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि डायरेक्टर श्री पंकज कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। Thanks, sir. Thanks a lot, sir. Now I request Professor A.K. Tripathi, sir, Dean Academics, King George's Medical University, to please come for the podium, sir, for vote of thanks. Thank you. It's a matter of immense pleasure and honor for me to propose vote of thanks on this great occasion, that is inauguration of Y20 Consultation organized by King George's Medical University, Lucknow. We are extremely thankful to our chief guest, Shri Navneet Kumar Sehgal ji, Additional Chief Secretary, Ministry of Youth Affairs, Uttar Pradesh, for accepting our invitation to grace this occasion. Sir, it was due to your help and support that we have been able to organize such a great event. Our sincere gratitude to our mentor, Lieutenant General Dr. Bipin Puri, Honorable Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow, for his guidance, encouragement, support, and blessings. We are immensely thankful to Shri Pankaj Kumar Singh, Director, Department of Youth Affairs, Government of India, for his graceful presence. Sir, we truly acknowledge your regular interactions to help us organize this prestigious event. Thanks to Professor Vinay Sharma, Pro Vice Chancellor, KGMU, who is always available for his guidance and help whenever we need. Thanks to Mr. Anmol Sovit, Chair Y20 India,
and Shri Shivanand Dwivedi, advisor to Y20, your presence means a lot to us while we are organizing this event. Special thanks to officials and delegates from Ministry of Youth Affairs, Government of India, Y20 representatives from Indian Institute of Management, Raipur, who is our knowledge partner for Y20 events, Dr. Vinod from AIMS, Rishikesh, and other esteemed guests present on this occasion. My sincere thanks to all speakers, international and national, members of panel discussion, international delegates, delegates from all 75 districts of Uttar Pradesh, participants from affiliate medical colleges, and delegates from Sports College Lucknow. Lot of thanks to whole organizing team, including faculty, students, and staff, who have worked tirelessly for a couple of weeks to make this program a great success. Last but not least, my sincere thanks to friends from media for the wide coverage of this important event, that is Y20 Consultation. Thank you all once again. Thanks, sir. Now I request everyone to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे